Greetings to everyone watching this video. So आज हमारे साथ है प्रणव सावंत फ्रॉम VJTI मुंबई। वो भी अपने फाइनल ईयर में है। ही इज माय क्लासमेट एंड उसका प्लेसमेंट हुआ है टाटा डिजिटल। अभी व्हेन इट कम्स टू TCS, तो TCS निंजा हुआ, TCS डिजिटल, टाटा डिजिटल, ये काफी हॉट टॉपिक्स होता है। बहुत सारे स्टूडेंट्स अक्रॉस इंडिया दे अप्लाई फॉर दीज कंपनीज, अप्लाई टू दिस कंपनीज एंड फॉर द पोजीशंस दे ऑफर। सो ये वीडियो थोड़ा क्या बोलते हैं ना, हम लोग थोड़ा स्पेशल होने वाला है एज कम्पेयर टू अदर वीडियोस। एंड अभी थोड़ा हम लोग इंट्रोडक्शन की तरफ जाते हैं। प्रणव, प्लीज गो फॉरवर्ड विथ योर इंट्रोडक्शन। Yeah, first of all, thank you, Vedant, for having me. My name is Pranav Sawant. I'm currently studying in VJTI Mumbai, final year EXTC. As Vedant said, I'm his classmate. And I've previously interned in Axis Bank as a digital product owner. And then I have selected Tata Digital as the software engineer for full-time role. And my interests include competitive programming, DSA stuff, and also ML to a certain extent. Okay, got your point. So like when you applied to the Axis Bank for your summer internship, then ऐसा फर्क क्या लगा दोनों की प्रोसेस में? बिकॉज एक्सिस एक थोड़ा मतलब बैंक टाइप हो गया, बट स्टिल योर रोल वाज डिजिटल प्रोडक्ट ओनर। तो क्या ये प्रोडक्ट डेवलपमेंट एंड मैनेजमेंट की तरफ थोड़ा इंक्लाइंड रोल है या कैसे था वो? I'll tell you, digital product owner could be said as the combination of both technical as well as management stuff. So मेरा role ऐसा था कि I had to plan the route in which account creation can be digitalized and can be increased manifold for the consumers. So ऊपर से overview दूँ, so my role was to make video KYC for new account creation. अच्छा, So okay. what I had to do is plan API and stuff. So it had both technical as well as management. See, user को कहाँ difficulty होगा, and we have to plan that, and it was the rule. Yeah. अच्छा, तो मतलब ये जब मैंने सुना लाइक वीडियो KYC, तो वाज दिस रोल मच अबाउट कंप्यूटर विजन या फिर यू वर इन द बैक एंड कैटेगरी जहां पर लाइक वेब डेवलपमेंट एंड ये सब करना था? No, this was more of a pure backend stuff. I had to plan APIs. So there were pre-existing APIs, and I have to test it out, and then we have to see whether this API could be used, because Axis has some proprietary APIs. I cannot disclose it, but yeah, we had to use that APIs, and then we have to make a journey through using that APIs. Got you. So like overall, as you said, कि internship के time you got into Axis Bank as for the internship in digital product owner domain. Then you got a PPO from Axis as well. And at the same time, like before getting your PPO, during the campus placements, Tata Digital came around like in the month of August, and you were placed as a digital engineer, if I'm not. Okay. So ऐसा मतलब थोड़ा टाटा डिजिटल के भी प्रोसेस के बारे में बता दो, बिकॉज ये वीडियो ही उस पे है। तो लाइक व्हाई टाटा डिजिटल इन जनरल, मतलब रीजन क्या था वो चूज करने का, एंड ओवरऑल रोल कैसा, मतलब व्हाई डिड यू लाइक द रोल? Okay, so first I'll tell you why Tata Digital. I received an PPO from Axis Bank, but what I was in my mind is I had to do software engineering, because since 12th standard and all, I'm studying Python, so there was some interest in software development since day one of my engineering. So being a digital product owner is also good, but I had to go to pure software engineer, which was provided me by Tata Digital. So I opted for it instead of Axis Bank. And the second question is, what was this? अच्छा, नहीं मतलब सेकंड क्वेश्चन ये था कि डिजिटल इंजीनियर वाला जो रोल था, लाइक व्हाई डिड यू स्पेसिफिकली लाइक दिस रोल? एंड आई थिंक यू गिव द आंसर फॉर इट, बट यू कैन give more in detail. So digital engineer was like synonymous to software engineer, and there's nothing different in it. So I checked the description, job description, which was given by them. So it was similar to software engineer, so there was no difference in them. Yeah. Okay. So like usually क्या होता है इंडिया में, TCS बहुत सारे टेस्ट कंडक्ट करता है लाइक एवरी मंथ और 2 months। तो जैसे TCS NQT एंड वो सब होता है, उसमें से पीपल कैन गेट इनटू टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज और TCS डिजिटल। तो ये थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है, कोरा एंड यहाँ वहाँ क्वेश्चंस मिल जाते हैं इसके अराउंड कि TCS डिजिटल एंड टाटा डिजिटल में कुछ डिफरेंस है क्या? सो लाइक
अभी तक ऐसा क्लियर आंसर इवन नेट पे भी नहीं मिला है कहीं पर, बट कुछ टेक फ्रॉम योर साइड ऑन दिस? Yeah, this question, in fact, I had asked my interviewer. So, Okay. what's the difference? I'll tell you. TCS basically can be considered in consultancy part, consultancy domain. So, what TCS Digital, it provides consultancy, digital consultancy to its consumers. But Tata Digital, if we consider, I'm sure you have heard about Tata new app. This Yeah. IPL, it was there. So Tata Digital purely built this app. So you can say Tata Digital falls under product-based company. So there's a clear difference that this is a service-based company and Tata Digital is a product-based company. So this Okay. is the difference I can say. Yeah. अच्छा, तो फिर ऐसे भी बोल सकते हैं कि जैसे क्या बोलते हैं, एक कोई प्रोडक्ट कंपनी हो गई, लाइक गूगल हो गया, जैसे गूगल अपने प्रोडक्ट्स तैयार कर रहा है, वैसे टाटा डिजिटल इज मेकिंग प्रोडक्ट्स लाइक टाटा न्यू एंड ऑल, एंड फिर टीसीएस डिजिटल कैन बी दोज पीपल जो टाटा डिजिटल को भी एक सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, मतलब whenever required and also to the clients they are currently you're served. right. You're right. Okay. अच्छा, तो लाइक थोड़ा राउंड्स एंड ऑल के बारे में भी बताना, बिकॉज कैसे है यूजुअली जब टीसीएस एनक्यूटी दे के लोग जाते हैं, फिर वाया कोड विटा या फिर ऐसे जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स के थ्रू लोग टीसीएस में जाते हैं या फिर टाटा के कंपनीज में, तो उनकी थोड़ी प्रोसेस अलग होती है, ऑन कैंपस थोड़ी अलग होती है, एंड टाटा डिजिटल डजंट विजिट एवरी कैंपस अराउंड इंडिया, वो कुछ अच्छे जो कैंपस है वहां विजिट करते हैं। तो हाउ वाज योर ओवरऑल एक्सपीरियंस, एंड हर एक राउंड के बारे में इफ यू कैन टेल अस इन डिटेल, तो इट विल बी हेल्पफुल। Okay. So during my interview process in Tata Digital, we had I think 2 rounds. Yeah. So first round was purely technical, and second round we can say combination of technical and HR. So in first round, they were basically asking me about data structures. So I can remember one data structure that was linked list. So they asked absolutely everything about linked list, including how it is implemented, then how to sort it, how to reverse it, and then what is the difference between array list, linked list, and how basic linked list questions were asked for me in this first round. Now in the second round, I was again asked about my projects, and then internship experience, and then about clouds, cloud-based engineering. So how to scale cloud, how to scale applications on cloud, horizontal, vertical, etc. So this was asked, and then few HR related questions like team building and stuff. This was asked in round 2. ओके ओके, एंड ये तो हो गया लाइक अबाउट द इंटरव्यूज, एंड जो टीसीएस की आई मीन टाटा डिजिटल की जो टेस्ट थी व्हिच यू गेव ऑन कैंपस, वो अगर उनकी डिफिकल्टी हम लोग बाकी किसी कंपनी से कंपेयर करें, जो टेस्ट की यूजुअली डिफिकल्ट होती है, एप्टीट्यूड हो गया या फिर कोडिंग क्वेश्चंस हो गए, सो हाउ विल यू कीप इट, मतलब लाइक यू आर अ गुड कोडर, बट एक एवरेज कोडर के लिए जो ये टेस्ट देगा, उसके लिए ये टेस्ट कैसे रहेगी when it comes to difficulty? I would say it was easy medium. There were 2 questions on HackerRank for the online assessment. First was basically greedy, and second was I think a DP solution, dynamic programming. Okay. So both were easy. I solved both. So I was selected after that online assessment. अच्छा, got you. Yeah. तो मतलब जैसे होता है ना कि टीसीएस की जब बात आती है, दे अलाउ एवरी टाइप ऑफ पीपल, लाइक मतलब जो क्या बोलते हैं ना, बायोटेक इंजीनियरिंग से भी हो सकते हैं, सिविल से भी हो सकते हैं, जो उनके ऑनलाइन टीसीएस एनक्यूटी के लिए अपीयर हो जाता है, बट ऑन कैंपस आई मीन मुझे पर्सनली याद नहीं है, बट डिड दे अलाउ एवरी ब्रांच टू सिट फॉर द प्रोसेस या No, फिर I कैसे था? think it was only circuitry, electrical, electronics, EXTC, and computer and IT. Yeah, अच्छा, this was the ओके 5. This was the ओके, criteria. अच्छा, एंड कुछ जीपीए क्राइटेरिया था उनका? Above 6 or 7. Yeah, above 6 or 7 because it was ओके, pretty 6.75 manageable. था शायद। 6.75. Yeah. हाँ हाँ, तो या मतलब जो व्यूअर्स है दे कैन अंडरस्टैंड कि आप एलिजिबल तो हो सकते हो, बट द मेन पार्ट इज कि आपको एप्टीट्यूड एंड जो कोडिंग क्वेश्चंस है यू हैव टू क्रैक इट, ताकि आगे आपको थोड़ा मतलब चांस मिल सके इंटरव्यूज में खुद को प्रूव करने के लिए। एंड ओवरऑल तो मतलब ये हो गया अबाउट योर इंटरव्यूज एंड द टेस्ट। तो कुछ ऐसा स्पेसिफिक मटेरियल डिड यू फॉलो फॉर ऑल दिस, लाइक यू सेड कि फ्रॉम द 12th और आफ्टर योर 12th यू हैव बीन स्टडिंग पाइथन एंड प्रैक्टिसिंग इट हैंड्स ऑन, तो ऐसे कोई प्लेटफॉर्म्स या फिर मटेरियल दैट यू हैव बीन रेफरिंग टू? I have referred to Geeks for Geeks, Lead Code,
like I have done almost 400 questions on lead code during my interview phase. So I've practiced lead code a lot. And then for doubts related stuff, YouTube is always there, and also Geeks for Geeks for blogs and stuff. And for competitive, I hadn't done so many competitive coding contests during my interview phase, but now I'm doing. But I would refer Code Forces and Coursera. अच्छा, okay. So I got the idea about the material you used for your preparation. अभी कैसे होता है कि CTC यूजुअली हम लोग डिस्क्लोज नहीं करेंगे ये वीडियो में एग्जैक्ट जो CTC था, बिकॉज हर एक कॉलेज के लिए कंपनीज अलग अलग रख सकती है एंड मतलब टीयर्स के हिसाब से एंड ऑल. तो बट एक जनरल टर्म्स में जो कंपेंसेशन ओवरऑल द टाटा डिजिटल गिव्स, ये अगर देखा जाए तो थोड़ा TCS डिजिटल या फिर TCS निंजा जो क्लेम करती है ऑनलाइन उससे थोड़ा ज्यादा है. मतलब आई वुड से इन द गुड कैटेगरी, जो कुछ कुछ कॉलेजेस के लिए ड्रीम कैटेगरी में भी आ सकता है. सो लाइक व्हाट्स योर टेक ऑन इट एज कंपेयर्ड टू उनके पीयर्स? हाउ इज द ओवरऑल कंपेंसेशन? हाउ वुड यू रेट इट? I won't disclose the overall compensation, but I would say it's in double digits. Yeah, I would say that. Yeah, double digits LPA. okay. So that's good. That's तो मतलब अभी कैसा है, ये तो सब हो गया. तो रेज्यूमे जो मेन पार्ट आता है, लाइक बिफोर द टेस्ट क्या TCS ने आई मीन टाटा डिजिटल ने रेज्यूमेस मांगे थे या पोस्ट टेस्ट उन्होंने रेज्यूमेस मांगे थे? एंड अगर रेज्यूमे मांगा भी था तो उन मतलब ओवरऑल अगर देखा जाए तो रेज्यूमे में ऐसी क्या चीज है जो एकदम स्टैंड आउट कर गई इन योर रेज्यूमे एंड जिससे लाइक यू फील कि टाटा डिजिटल में प्लेस होने में हेल्प हो सकी हो? तो दो चीज है इन माय रेज्यूमे. आई हैड वन internship experience in Axis Bank. So that made me stand out. And also second thing was my problem solving numbers. So as I had said, on lead code I had solved 400 questions. So they knew ki I had solved many questions, so I have the problem solving capability. So that was the two things I can think of that stand out in my resume. अच्छा, you said कि you have been practicing Python since your 12th. Yeah. तो ऐसे कभी मतलब जब टाटा डिजिटल की टेस्ट दी, लाइक मैंने भी वो टेस्ट दी थी, सो आई रिमेम्बर कि उसमें मल्टीपल लैंग्वेजेस का ऑप्शन था इन विच यू कैन कोड योर क्वेश्चंस. बट स्पेसिफिकली ड्यूरिंग योर इंटरव्यूज, लाइक ऐसे इंटरव्यूअर ने या फिर किसी ने कुछ कमेंट किया इस पे कि लाइक व्हाई डिडंट यू प्रैक्टिस जावा, व्हाई स्पेसिफिकली पाइथन, या फिर ऐसा कुछ नहीं है, कुछ रेस्ट्रिक्शंस है नहीं? आई डोंट थिंक रेस्ट्रिक्शंस होने चाहिए, पर certain companies, for example, I think apne college mein we had Samsung. So in their online assessment they only had C and C++. Okay. So people got stuck there. So I think Python is a great language. But after a period of time I had switched to C++, which was universal because every company needs a C++ guy. Every company's hiring process has C++ language because it's Correct. Basic thing. So in interview to all the concepts which Python has, C++ has it too. So learning C++ was very handy for me. And then I had given all my online assessment in C++. Even the code they had asked in the technical round, I also wrote in C++. Okay. So मतलब अच्छा कि you have been practicing Python, but जो टेस्ट दी थी वो C++ में दी थी. C++ में. I am not denying कि Python खराब है, पर C++ is faster than it. Yeah. हाँ, yes, exactly. तो मतलब यही होता है कि बहुत सारे लोगों को एक मतलब कंफ्यूजन होता है कि लाइक which language to go with when it comes to the placements part. तो ऐसा समझ लो कि Python should be your go to language. वो आजकल हर जगह यूज हो रही है, बट मेक श्योर कि जावा या फिर C या फिर C++ इन तीनों में से कुछ एक लैंग्वेज अपनी एक ऐसा फाउंडेशन लैंग्वेज जैसे बना के रखना, which you can use it during the placements. Because you cannot use C++ during machine learning. Yeah. So pre-installed libraries we have in Python. Correct. It is not in C++. So Python comes in handy. Yeah, Python comes in handy when web development, even in Flask, machine learning stuff. Yeah, we have to learn Python, but keep C++ in your back. Specifically coding questions के लिए, like competitive coding के लिए, C++. Yeah. Okay. So that's great. And अभी हम लोग थोड़ा मतलब सेशन के एंड की तरफ आ रहे हैं. So
अभी मतलब एंडिंग में मैं यही पूछूंगा कि लाइक टाटा डिजिटल ने जो मतलब प्लेसमेंट होने के बाद ऐसे कुछ बोला है कि लाइक स्टूडेंट्स हैव टू कम टू अ स्पेसिफिक ऑफिस, या उनका वो अवेलेबल है पैन इंडिया, या फिर कैसा है? एंड ओवरऑल उनके साइड से उन्होंने कुछ बोला है लाइक देयर विल बी सम ट्रेनिंग सेशंस, या फिर ऐसा कुछ होने वाला ओवरऑल? Tata Digital only has one office, which is in Fort Mumbai. ओके. So I think almost 103, 103 students all over the India have to come to Fort, which is in Mumbai, and it's the only location currently for Tata Digital. And regarding the training thing, we had a place internship for 6 months, but the TPO doesn't allow you, as you know, too. या TPO doesn't allow. हाँ, कॉलेज So रूल्स पे that's डिपेंड करेगा. सो या college rules पे VJTI depend doesn't करेगा. allow it. But I've contacted a guy from VIT. He said he was given permission to attend, and it was work from home, so it was easy for them. But we weren't allowed, so that's why placement training thing was not done for me, not there for me. ओके ओके. सो मतलब शायद फॉर स्टूडेंट्स लाइक यू आगे जाके माइट बी ऐसा माइट बी पॉसिबल Yeah, कि टाटा डिजिटल they'll कुछ train. अरेंज कर सकता है. या Yeah. सो लाइक अभी तक के वीडियो से आई मीन जितना हम लोगों ने देखा अभी तक, सुना मैंने फ्रॉम यू एज वेल, तो हमने राउंड्स के बारे में डिस्कस किया, कंपेंसेशन के बारे में एक ओवरव्यू लिया, देन वी डिस्कस्ड अबाउट द राउंड्स एंड एवरीथिंग, मतलब जो टाटा डिजिटल के अराउंड है. तो लाइक अभी एक एंडिंग के लिए लाइक टचअप जैसे एनी सजेशन फ्रॉम योर साइड व्हिच यू वांट टू गिव टू योर जूनियर्स, या फिर इवन योर कलीग्स जो अभी भी टाटा डिजिटल के लिए जाके प्रिपेयर करना चाहेंगे ऐसा? आई वुड से DSA प्रैक्टिस करो, थोड़ा सा कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग करो, बिकॉज कॉम्पिटिटिव प्रोग्राम व्हाट इट डज इज एक लिमिटेड टाइम फ्रेम में यू हैव टू सॉल्व मैक्सिमम क्वेश्चंस फॉर क्लियरिंग द ऑनलाइन असेसमेंट. So for that, we need to get a taste of competitive coding. So thoda sa karo, and then DSA we have to do it for interviews and stuff for software related things. And projects, do maximum I think of 2-3 projects are enough, but we have to we कैसे explain करें वो projects. हाँ हाँ. So we should be we should be able to explain those projects, like कौन सा tech stack, why that tech stack, and which technologies we used, etc. So we need to explain that to the interviewer. So that's why थोड़े projects करो, but explain them well. अच्छा हाँ, मतलब यस एग्जैक्टली, मतलब रेज्यूमे पे ऐसे बहुत लोग करते हैं कि उनके जो प्रोजेक्ट्स होता है वो थोड़े घिसे पिटे होते हैं, यहाँ वहां से फोर्क करके उन्होंने सिर्फ हल्के चेंजेस करके डाले होते हैं. सो उस केस में वो लोग एक्सप्लेन नहीं कर पाते उनके प्रोजेक्ट को. बट इट्स बेटर कि इफ यू आर मेकिंग द प्रोजेक्ट फ्रॉम स्क्रैच, अगर स्क्रैच से भी नहीं कर रहे हो तो मेक श्योर कि यू आर एबल टू एक्सप्लेन इट, एंड थोड़ा मतलब उसमें प्लेजरिज्म कम है, एंड खुद से अच्छा खासा काम उसमें किया रहे. हाँ, तो और थोड़ा प्रोजेक्ट में यूनिकनेस होना चाहिए. लाइक इफ यू सी 100 resumes, इनमें से 50 से ज्यादा तो इमेज रिकॉग्निशन वाली होंगे, कैरेक्टर डिजिट रिकॉग्निशन. थोड़ा यूनिकनेस, लाइक अगर यूट्यूब से भी अगर पाइथन एक वेबसाइट बना लो, तो कुछ खुद का फीचर डालो, लाइक बाय एंड सेल स्टफ. वी आर मेकिंग एन वेबसाइट रिलेटेड टू Amazon क्लोन. सो थोड़ा पेमेंट गेटवे कैसे बनाया, दैट वुड बी अ यूनिक स्टफ फॉर द इंटरव्यूअर. और सॉर्ट कैसे किया एक प्रोडक्ट के पूरे, लाइक इफ यू सिलेक्ट फ्रूट्स, तो सॉर्ट कैसे किया कि रिलेटेड टू, तो वो सॉर्टिंग का फीचर भी इफ यू ऐड बाय योरसेल्फ एंड एक्सप्लेन इट टू द इंटरव्यू, इट विल बी गुड थिंग, लाइक चेरी ऑन केक. एग्जैक्टली एग्जैक्टली, क्योंकि ई कॉमर्स पे तो 1000 लोग काम कर रहे हैं, बट यू हैव टू प्रूव इट टू टाटा डिजिटल कि तुम्हारा जो टेक है रिलेटेड टू दैट वेबसाइट वो कैसे अलग, कैसे यूनिक है. तो ऐसी चीजें विल मैटर द मोस्ट, एंड नॉट जस्ट द टाटा डिजिटल बट एनी अदर कंपनी जो प्रोडक्ट फील्ड में है, या फिर ऐसे जिनको ये प्रोजेक्ट्स जहां पर मैटर करेंगे. तो ओके, मतलब वैसे तो अभी सारे क्वेश्चंस हमने कवर कर ही लिए, एंड थैंक्स अ लॉट ये सेशन में आने के लिए. आई एम प्रीटी श्योर कि व्यूअर्स को बहुत फायदा होगा ये वीडियो से, एंड हमारे कॉलेज के जूनियर्स भी एंड बाकी सारे लोग भी, बिकॉज ये थोड़ा हॉट टॉपिक होता है टाटा डिजिटल एंड ऑल, बहुत सारे लोग अप्लाई करते हैं. So they'll get something out of this. And also to the viewers, like if you have any doubts, please write it in the comment section. I'll definitely try to get along with Pranav, and उसके साथ align करके हम लोग वहाँ पर answers जरूर post करेंगे to every kind of your doubt. Okay. Thank you. Sure. Thanks a lot, Pranav.